Okay. As you see the very first line, in every walks of life, we're witnessing the revolution. There is a transformation of the business and services needed and wanted by the people. So now there is revolution in every field of life, whether it's the IT or whether it's a tourism or whether it's a technology. Technology though is the keep on going. But the thing is that management is very important concept. You can come to next page. Second line, management is an activity of getting things done through the efforts of the other. That means management is an art. Okay. In 11th standard, in 12th standard, you were studied about the management. Okay, management, how the management people is getting things done through the people. In order to achieve the business objective, there is need to bring together. Okay, that means see, business is not a one-time activity or business is not a one-man activity. If you want to do the business, there should be amalgamation or that will be an assemble of many person together like man, material, method, machine, money, market, and popularly known as the 6M of management. Are you able to see, student? Just look at the page number 3, first paragraph. Please respond, student. Hello? Yes, Student? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. See, as you know, there will be objective questions for you. So the question may be out of 6M of management. So what are the 6M? Man, material, method, machine, money, and market. This all will represent the 6M of management. Okay. Now see, मैनेजमेंट इज इन क्रिएटिव वर्क ओके मैनेजमेंट सारे लोगों को साथ में लाना सारे लोगों के साथ काम करना इट्स एन क्रिएटिव वर्क जो मैनेजर करता है मैनेजमेंट करता है ओके सो कैपिटल मैन पावर सारी चीजें इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट लेट्स सी द मैनेजमेंट डेफिनेशन ओके देयर आर वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय द वेरियस पीपल ओके so we'll go through all the definition. Can you able to see the screen? Yes, student. According Yes, to the ma'am. okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, we'll go through the definition of the two people. Henry Fayol. Henry Fayol is a very famous person. He has given the 14 principles of management that you've studied in 12th standard, right? 12th standard OC. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. So you all know Yes, Henry ma'am. Fayol. Let's see what Henry Fayol want to say about the management. According to the Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. Can anyone can explain me what is the meaning of this sentence? Anyone? Anyone? Manage is to forecast. Let's see, in the business we have to forecast, we have to plan. See, while making the product, we don't know whether this particular product will be survive in the market or it will be not survive in the market, but we have to do the forecast. We have to do the planning. The fourth very important thing in the management is to plan. Okay. And after planning, we have to organize the thing. That means whatever thing is required, we have to organize it. And then we have to give the command to our subordinators, to our employee to do this. And then we have to coordinate with them. There will be levels of management, top level management. You have already studied top level management, middle level management, lower level management. Okay, top level management give suggestions or advices to the middle level management, and the middle level management to the lower level management. And at the end, they have to control the each and every thing. So basically, management is what? First, they have to do the planning. They have to plan the things. Then, after making the plan, they have to organize the thing. They have to command the thing. They have to coordinate, and they have to control. Okay, we'll see one more definition of the Mary Parker Follett. Management is the art of getting things done through people. See, if you ask the people, if you tell the people to do this, to do that, they will not do. So it is an art. A management should have an art. Okay, आर्ट होना चाहिए कि किस तरह से लोगों से काम निकलवा के ले तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द पीपल okay so I explained you two definition one is given by Henry Fayol and one is given by Mary Parker Follett according to your convenience आप कोई भी definition बाहर कर सकते हो I hope both the definition has been clear to you student both the definition has been clear please respond student Yes, ma'am. okay now let's see what are the nature of management what is the nature of management that means how the management key features kya hai economic resources okay
Economic resources. As a coordinator of the economic resources, management has the universal application. See, what is the meaning of universal application? That is the management principle. Whatever the Henry Fayol has given the principle of management. See, Henry Fayol is not belong to India, but whatever the principle of management Henry Fayol has given is applicable to the Indian management also. It's applicable to the American management also. It's applicable to the whole world. That means whatever the management principle has been given, or whatever the management principle, that is not applicable only to the particular country. It is applicable for the whole world. So whatever Henry Fayol has given the various principle. Can anyone name me any one of the principle? Henry Fayol is given the 14 principle. Any one principle? Anyone? Principle of order. Principle of order. That means that everything should be there in order. So this principle is followed by not only by the Indian management, it should be followed by the worldwide. So first, the nature of management is that it has a universal application. It is not applicable to the particular country. It is applicable for the whole world. Okay, this one is clear. So economic resources. Economic resources means what? Whatever land, whatever capital. In 12th standard economics, you will learn about the factors of production. Student, remember factors of production: land, labor, capital. Please respond. Yes, ma'am. Yeah. So if you want to do the business, you require land, you require capital, you require entrepreneur. This all are the factors of the production. And this is all which resources? This is all economic resources. The second point is that a system of authority. A manager is expected to get a work done from the others. Okay. A management is a person, or a manager is a person who give command, okay, who give authority. If you remember, Henry Fayol is given one principle: authority and responsibility. Remember this principle, authority and responsibility? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means it is very much important. It is very, see, just for example, I am your teacher. So I'll tell you to please open the book, please learn this definition. That means I am giving you command and you are following my command. Okay. Same way in the Order and organization. command. Sorry, huh? So same way in the business also. The manager at the superior level give the command to the person who is under him to do this work, do this work. And the person should be this. For example, see, if I am explaining you, and suppose if I'm not explaining well, so what you will do? You will leave the lecture, or next time you will not attend the lecture. Okay. But if you find my lecture very interesting, if you find that my explanation is very good, so what you will do? You will again and again attend my lecture. Even you will convince the other student also, those who are not attending, the please ke ma'am ka lecture attend karo, acha hai. Okay. That means ki the manager has the authority, but वो authority उसको अच्छी तरह से use करना चाहिए. That means he should not always order his subordinator. उसको enjoy करना चाहिए. That means, see, when you get up early in the morning and you attend the lecture, you should enjoy that lecture. The lecture ऐसा आपको लगना चाहिए कि हाँ ये lecture attend करके हमको कुछ मिल रहा है. Okay, हमको knowledge मिल रही है. Okay, तो authority होनी चाहिए, but जो subordinator है वो काम करना enjoy करना चाहिए. Every manager is given a relation freedom to approach. That means कि वो जो subordinators है वो हमेशा उनको डांटना नहीं चाहिए, उनके साथ आराम से काम कर लेना चाहिए. This one is clear. Second point. Second point is clear, student? Hello? Yes, ma'am. At least give me yes, Yes, and ma'am. no. Okay, next point is a group approach. Yes, ma'am. The nature of management has changed from individualistic approach to the group approach. Management is the activity not only for the one individual. See, a business management or anything cannot be managed by the one person. If I'll say कि ये company successful है, see for example, if iPhone is very successful, Apple is very successful, so it is not an individual. किसी एक इंसान की वजह से नहीं. It is in group activity. There are group of people. See, in an organization, there are various group of the people. There are various departments. For example, there is a marketing department, there is a finance department, there is a HR department, and it is a group of the people who are working together as a team. इसकी वजह से organization successful है. So management is not an individualistic approach. That means वो किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि वो एक group approach है. Okay. Next point you can see in the next page. A mark of discipline. Discipline refers to the field of study having a well-defined concept and the principle. That means, see, discipline plays a very important role. Even in the Henry Fayol 14 principle of management, one principle is discipline. See, in every walks of life, whether it is a personal life or whether it is a professional life,
Discipline plays a very important role. Suppose if there is no discipline, then you cannot be successful. The same in the organization also. There should be well discipline, proper coming time, proper going time, okay, proper lunch break, and proper everything should be in the proper. Discipline should be well maintained. Next point has a process. Management is a process. Now, what is a process? That is, it is not a one-time activity. एक बार कोई काम कर लिया और छोड़ दिया, नहीं. Business जो है, this business is an ongoing activity. Business जो है वो चलता ही रहता है. Okay, one after the other. You introduce one product into the market, then that product is successful. Again, then you have to introduce second product into the market. That means कि business जो है one time process नहीं है. It is a continuous process. जो मैनेजर है उसका काम जो है continuously काम करना है. You can see last line आप लोग देखो वहाँ पे manager activities are performed to get anything done through people. There's a plant manager directing workers in the shop floor area. That means कि मैनेजर को जो है अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा के लेना है, उनको काम देना है ताकि वो अच्छी तरह से उनका काम कर सके. लास्ट पॉइंट एज अ करियर. मैनेजमेंट इज ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द मैनेजिंग द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजमेंट है वो अभी करियर में बन चुका है. ओके, इफ यू वांट टू टेक आप मैनेजमेंट में अपना करियर भी बना सकते हो. देयर आर वेरियस जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन बीबीआई, आफ्टर दैट यू कैन डू द एमबीए एंड मैनेजमेंट से आप आगे भी बढ़ सकते हैं. आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स. अगर कोई पॉइंट नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स. एनीथिंग यू वांट टू आस्क स्टूडेंट तो प्लीज आस्क. एनी पॉइंट? कैन आई मूव फॉरवर्ड? कैन आई मूव टू इंपॉर्टेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट. Hello. Yes, ma'am. Okay, let's see the importance, role, significance of the management. First is the optimum utilization of the resources. I think this point you have studied a lot of time. That means whatever resources we have, whether it is a physical resources, whether it is a human resources, whether it is a financial resources, जो भी resources हमारे पास है, हमको उनको waste नहीं करना है. We have to utilize them fullest. Okay, resources हम जो भी, जैसे physical resources क्या है हमारे पास, हमारा लैंड प्रॉपर्टी, ह्यूमन रिसोर्सेस है, हमारे एम्प्लॉय, जो भी रिसोर्सेस है हमको पूरी तरह से उसको यूज करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. मैनेजमेंट डेवलप द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन द एंटरप्राइजेस. दिस enable the enterprises to develop and expand its assets and the profit. That means you should be competitive enough into the market. See, this is 21st century और यहाँ पे there is a competition each in and everything. अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा दूसरे के साथ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर. सी इफ यू सी पेंसिल, रबर, इरेजर, ऐसी चीजों के लिए भी मार्केट में हैवी कंपटीशन है. तो इफ यू वांट टू सर्वाइव इनटू द मार्केट तो आपको कॉम्पिटिटिव होना है, उससे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ेगी. थर्ड पॉइंट, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन. यू हैव टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन. आपको अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं हर किसी के साथ. सी मैनेजमेंट डेवलप द कॉर्डियल रिलेशन, better life and welfare to the employee, their morale. जो भी एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं आपको उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना है ताकि आपके एम्प्लॉय जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेट एम्प्लॉय. Motivate employee, that means encouraging the employee. Okay, you have to always encourage the employee to do their best, because as I told you there is a competition each and everything. ओके, इफ यू गो इन द मार्केट, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, अगर आपका बिजनेस टॉप पे जाए, दैट मींस दैट एम्प्लॉय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू हैव टू एनकरेज योर एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट. ओके, अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो बिजनेस का सेल इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा और एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को बड़ा करना. ओके, तो बिजनेस आपका कब बड़ा होगा? जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. ओके, आपने स्टार्ट किया नेशनल मार्केट के साथ, अभी आप सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, बट सपोज योर प्रोडक्ट इज वेरी गुड, तो आप क्या करोगे? यू गो टू द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा. एंड देयर बी अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस. डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप एक यूनिट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा जो है वो टाटा सॉल्ट भी बनाता है और टाटा मोटर्स भी बनाता है. ओके, क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड. हेलो.
Yes, ma'am. What is the Yes, ma'am. diversification of Yes, business? ma'am. That means the business should not limit. वो एक जगह पे नहीं होना चाहिए. जैसे for example, Tata is a product, Patanjali is a product, जो हर चीज बनाती है. They are diversified. उनका business diversified है ताकि उनकी corporate image बढ़े, उनका goodwill बढ़े. Next, stability and the prosperity. See, it is very much important कि stable हो. See, once you come into the market, आप market में आ जाते हो, then you should be there into the market. आपको competition है, जैसे मैंने बोला, in 21st century there is lot of competition in the market. And अगर आपको competition को survive करना है, तो आपको best देना है. Okay, you have to satisfy your employee, you have to satisfy your customer. If customer is a king of the market, अगर आपके product से आपका customer satisfied रहेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट मार्केट पे बढ़ेंगे और आप मार्केट पे स्टेबल रहोगे. दैट मींस सी कंपनीज लाइक सैमसंग, एलजी, आईफोन, ओके, जैसे गुड डे, ग्लोबस बिस्किट, ये आज भी है और आज भी ये आगे बढ़ रहा है. व्हाई? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द customer. So if you want to survive into the market and if you want to prosper into the market, it is very much necessary that you satisfy the needs and wants of the society, customer, employee. Next point is a team spirit. Okay, you have to develop the team spirit. As I told you that management is not a one man activity, it is a group activity. That means all the people involved, whether it is a finance department, whether it is a marketing department, whether HR department, whether it's a top level management, middle level management, lower level management, every management has to work hard, and it is an overall team spirit. Next, effective use of the manager. That means management ensure effective use of the manager. That means कि whoever the manager, कंपनी ने जिसको मैनेजर अपॉइंट किया है, उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास स्किल हो. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, स्किल हो, मैच्योर हो, कि वो सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेकर चले और अपने सबऑर्डिनेटर से काम करा के ले. बिकॉज सी, मैनेजमेंट का डेफिनेशन ही बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल. नेक्स्ट, स्मूथ फंक्शनिंग. अगर आपका बिजनेस अच्छे से काम करेगा तो ही आपके बिजनेस आगे बढ़ेगा. दैट मीन देयर विल बी ए growth of the business, there will be expansion of the business, आपकी profitability increase होगी आपके business की. Okay, and last point is reduce turnover and the absenteeism. It reduces, अगर आपका consumer satisfied है, अगर आपके labor satisfied है, तो वो absent नहीं होंगे, वो job छोड़ के नहीं जाएंगे. इससे क्या होगा, आपका business जो है prosper करेगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा. I think all the points are clear, student. Any difficulty in any of the point? Any difficulty in any No, of the ma'am. point? It's clear? No, ma'am. It's clear? समझ में आया? No, No, अच्छी तरह से? ma'am. No, Yes, ma'am. no means समझ में आया कि नहीं समझ Yes, में आया? ma'am. समझ में आया ना? मैम एक्चुअली हाँ, ma'am, हाँ, नाइन्थ ma'am. वाला मुझे हाँ, समझ ma'am. में नहीं आया. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? नाइन्थ वन स्मूथ फंक्शनिंग. स्मूथ फंक्शनिंग. स्मूथ फंक्शनिंग मतलब अच्छी तरह से काम करना है, स्मूथली कोई भी काम होना है. स्मूथली काम कब होगा, जब अच्छी तरह से हर चीज मैनेज होगी. ओके, दैट मीन्स कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. सी, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो एम्प्लॉय को उनकी सैलरी टाइम पर मिलेगी, गवर्नमेंट को उनके टैक्स टाइम पर मिलेंगे, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर मैनेजमेंट जो है अच्छी तरह से सब चीज करता है तो सारी चीजें स्मूथली काम करेगी. क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? यस मैम. थैंक Okay, यू no, मैम. no need for thank you. Next point is level of management and the function of management. Okay, you can see the level of management दिख रहा है आप लोगों को. There is a triangle, एक triangle बना हुआ है, ऊपर levels लिखा है. Levels of management, top level management, middle level management, and the lower level management. देखो एक pyramid है. The pyramid type diagram given below indicates the management. I think you have studied this in the OC last year. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now let's see top Yes, level. ma'am. Top level management में कौन है? Board of Directors, Chief Executives, General Management. Middle level management में कौन है? Departmental Heads, Junior Executives. And lower management में कौन है? Foreman, First Line Supervisor. Okay. So in the organization, in any business, there is a levels of management. The very first is the top level management, and in the center there is a middle level management, and last one is a lower level management. And each of this management has to prepare the different function. ये तीनों मैनेजमेंट को जो है अपना अपना काम करना है. लेट्स सी कि उनके क्या काम है. फर्स्ट विल सी द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
चीफ एग्जीक्यूटिव्स है, जनरल मैनेजर्स है। तो इनका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का मकसद क्या है वो उनको बनाना है। सेकंड, मिशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। फॉर एग्जांपल सी, if you talk about the SNDT University, SNDT is a women university, उनका एम क्या है? SNDT यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आप लोगों ने, राइट? यस, विमेन यूनिवर्सिटी के बारे में प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट। तो वो क्यों है? ताकि विमेन एम्पावरमेंट हो। सेम वे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? देन पॉलिसी, फॉर्मुलेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स, दैट मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? बिजनेस पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मकसद है वो अचीव हो। ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन एप्रोप्राइट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीजें डिजाइन करता है कि हमको जो भी चीज अचीव करनी है वो हम कैसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लाना, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज को भी अरेंज करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सुपरविजन, एक्साइजिंग सुपरविजन, दैट मींस के टॉप लेवल मैनेजमेंट ये भी देखता है कि प्रॉपर चीजें सुपरवाइज हो रही है या नहीं। देन कंट्रोलिंग, एस्टैब्लिशिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरह से सब चीजें हो रही है अगर कुछ ज्यादा वेस्टेज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्टिंग भी करता है और मेजर्स भी लेता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शन किसके हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग करता है, रिस्पॉन्सिबल टू प्लान डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सारी प्लानिंग, सारी ऑर्गेनाइजिंग सब करके रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट काम देता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो डे टू डे की प्लानिंग करेगा कि डे टू डे चीजें कैसे चलेंगी। सेकेंड, रिसोर्सेज, मेकिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज दे दिया है, अब उस रिसोर्सेज को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से वो रिसोर्सेज पे काम करना है, इसका काम किसका है? टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द एफिशिएंट एंड द एग्जीक्यूटिव स्टाफ, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना HR डिपार्टमेंट का काम है, वो भी काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर प्रोसीजर and the operating routine for the orderly function of the department, that means department किस तरह से काम करेगा, ये काम भी किसका है? top level management का। I hope this one is clear student, समझ में आ रहा है आप लोगों को?